Afternoon. We'll start with the next session. We are a bit behind schedule, so I'll request the chairperson to kindly uh, ensure that the timing is adhered to. So this session is now on election campaigns, digital technology and social media mobilization in India. And this is being chaired by Mr. Jaskirat Singh, who is a trustee of ADR. And the panelists are Mr. Saurabh Dwivedi, editor and founder of Lallantop. He's a senior journalist. Ms. Karen Rebelo, she's editor of Boom Live. Mr. Rakesh Reddy Dubbudu, he's the founder of factly.in, and he's also ADR state coordinator in Andhra Pradesh. And Mr. Pulkit Sharma, political strategist and digital media specialist. So I'll request Jaskirat ji to kindly come onto the stage, and the eminent panelists also, if you could kindly come up on the stage. A little word about Mr. Jaskirat Singh. He's a B.Tech from IIT BHU Varanasi. He's the founder of and CEO of Webro Solutions Private Limited, providing IT services. He's based in Ludhiana. And he, along with ADR, is the recipient of the NASSCOM Social Innovation Award of 2011 for the most innovative use of IT processes and dissemination of election candidate information to voters all over India. He is also the creator of our very popular website myneta.info, which is a repository of over 2 lakh politicians who have ever contested elections from about 2000 onwards. He also developed an app which is called the Election Watch Reporter, which was for reporting violations during the elections, and it was released in one of our national conferences at the hands of the then Chief Election Commissioner. And something like that was later developed by the Election Commission of India. So with that as the backdrop, I now hand you over to Jaskirat ji for conducting the proceedings. Thank you. So we are having a very interesting conference on a very, very interesting subject in very, very, very interesting times for politics in the country. And our session is also on a very, very interesting subject. I have to use, very twice somehow. So we are going to talk about technology, and particularly in technology in the context of elections. How technology is getting used in elections and how it is getting misused in elections. That is more important actually. And how it can potentially be misused in future, because technology is evolving very fast. और वो कहते हैं ना कि चोर हमेशा आगे होता है और पुलिस हमेशा पीछे होती है. तो the politicians are way ahead, and they are the experts in the game, and everyone else is trying to catch them, and but we have to learn fast, otherwise they will get away basically. तो इस पे बात करेंगे, and थोड़ा सा टाइम का वो है, मतलब we are running short of time, so we'll keep everything tight. We'll have 10 minutes for everyone to say what they want to say, and we'll try कि एक दो question अगर last में बच गया थोड़ा सा time तो we'll try. So this is the overall context. So our topic is election campaigns, digital technology and social media mobilization in India. तो इस पे एक छोटी सी मैं बात और करना चाहता हूँ before we start, कि एक fake news और fake narratives की बहुत बात जो है पिछले कुछ सालों से हो रही है. And the very fact that, I think we have 2 fact checkers here in the audience, on the panel. बहुत organizations fact checking कर रही हैं आजकल. Even हर news outlet is having a fact checking unit. So that is the proof कि इतना fake news आ रहा है. That is why you need a professional fact checker now, जो कि 10 साल पहले जरूरत कभी नहीं समझी गई थी. So we are living in such times, and we'll start. The first speaker I'll introduce. Our first speaker today will be Mr. Saurabh Dwivedi.
He's editor and founder of the Lallantop. He's a senior journalist, and yeah, good to know that most of us know him. Even I watch his shows regularly, and so नहीं, मैं एक आध बात इंटरेस्टिंग थी मैंने पढ़ा था जब, तो द चैनल हैज रीच ऑफ 40+ मिलियन यूजर्स. तो आज की डेट में जब मीडिया की बात होती है तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड सिग्निफिकेंट कि ये रीच जो है बनाई जा रही है इन ऑल्टरनेट वेज. वी नो द नॉर्मल वेज को क्या हो रहा है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है. बाकी सारी चीज़ें मैं छोड़ देता हूँ इन द इंटरेस्ट ऑफ टाइम. सर, यू आर वेलकम टू स्टार्ट. आप. बहुत शुक्रिया आपका. मैं हिंदुस्तानी ज़बान में बोलूँगा. हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों को नहीं आती हो, विच इज़ टोटली फाइन, क्योंकि हिंदुस्तान में कई भाषाएं हैं. अंग्रेज़ी में बोलने का विकल्प है, लेकिन उसमें आधा वक्त ट्रांसलेशन में और आधा वक्त ग्रामर नाजियों के खौफ में बीत जाता है. डर किसी भी किस्म का हो गलत होता है, सरकार का, समाज का ख़राब किस्म का, या मंच का भी. तो मैं माफ़ी चाहूँगा उन लोगों से जिनके लिए हिंदुस्तानी पहली ज़बान नहीं है, और मैं कोशिश करूँगा नरसिम्हा राव की तरह और भी भाषाएं सीखूं, भले ही मुझे पर्चा कहीं से ना भरना हो. मैं यहाँ पर आया हूँ इसलिए नहीं कि मुझे इस विषय में बहुत कुछ पता है. मैं यहाँ आया हूँ एक लालच के चलते. लालच ये है कि मैं विद्यार्थी जब था, अभी भी हूँ, जब एक संस्थान में भी विद्यार्थी था, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में, तब से ADR के बारे में सुन रहा था. प्रोफेसर त्रिलोचन शास्त्री, प्रोफेसर जगदीप छोकर के बारे में सुन रहा था. और उन्हीं दिनों एक बात समझ में आ गई थी कि आसमान से किसी रथ या घोड़े पर सवार होकर कोई मसीहा नहीं आएगा मुकद्दर बदलने के लिए मेरे देश का. हमारे आपके जैसे कुछ लोग होंगे जिनको कंधे जोड़ के और एड़ियाँ थोड़ी सी मोड़ के और कीचड़ में पाँव धंसा के इस रथ को हाँकना पड़ेगा जिस पे ये महादेश सवार है. ADR वो काम कर रहा है पिछले 2 से ज़्यादा दशकों से, और मैंने 2 लोगों के नाम लिए, लेकिन एक बड़ी टीम है, बड़ी संस्था है. तो मैं उस रेवरेंस, उस रिस्पेक्ट, उस श्रद्धा का आजकल बड़ा गलत ढंग से उसकी व्याख्या होती है. भक्त एक बड़ा राजनीतिक पद हो गया है. फिर भी आई हैव ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर व्हाट ADR इज़ डूइंग. सो माय प्रणाम टू यू गाइज, जो आप लोगों ने क्रिएट किया है. जो विषय है मैं उस पर भी कुछ कहूँगा, लेकिन एक जो मेरी बड़ी चिंता है ADR को लेकर भी और उन सब लोगों को लेकर जो पॉलिसी की फील्ड में काम कर रहे हैं, वो ये है कि अभी नीचे भी चर्चा हो रही थी, इस देश में 40 बरस के जीवन में जो मुझे एक बड़ी समस्या समझ में आई है, रोटी कपड़ा मकान दुकान, आइडेंटिटी की लड़ाई, डिस्पैरिटी की लड़ाई, इन सब के अलावा वो लड़ाई है या वो मुश्किल है कम्युनिकेशन की मुश्किल. अगर चीज़ें ठीक से दुरुस्त ढंग से कम्युनिकेट हो जाएं तो ज़्यादा जल्दी बेहतर हो सकती हैं. अगर फॉर एग्ज़ाम्पल स्कूल के दिनों में ही बच्चों को बता दिया जाए कि कास्ट बेस्ड स्लर क्या होता है, कास्टिज्म क्या होता है, रीजनलिज्म क्या होता है, लाइव एग्जाम्पल्स के ज़रिए अगर उनको LGBTQ के बारे में बता दिया जाए, तो वो बड़े होकर जिस किस्म के बौद्धिक अहंकार के साथ अपनी मूर्खताएं जताते हैं, उसमें उनका दोष नहीं है, उनको बताया ही नहीं गया. व्हेन आई वाज अ किड, तो मुझे बाहर जाकर खेलने से रोका जाता था गांव में, और वजह ये बताई जाती थी कि तुम बाहर जाके खेलोगे तो तुम किसी दैवी चमत्कार के जरिए जिस उच्च कुलोद्भव ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए हो, तो बाकी जो लोग हैं वो इस अद्भुत व्यवस्था में उतने ऊपर नहीं हैं, झगड़ा हो जाएगा, तुमने 5 मारे उन्होंने 1 मार दिया तो बड़ी बेइज्जती होगी. अब ये इतनी गड़बड़ चीज़ है अपने आप में, क्योंकि पहली चीज़ तो तुम्हारा पैदा होना एक बायोलॉजिकल घटना है, ठीक है. किसी लैब में, किसी कॉस्मिक ऑर्डर में ये कहीं कास्ट तय नहीं हुई है. तो जो आपके दिमाग में बचपन में ही हेजमनी डाल दी गई, उसका कोई मतलब नहीं है. और साल दर साल लगातार हमें हमारी कास्ट, हमारी क्लास, हमारा जेंडर, हमारा रीजन, हमारा रिलीजन पैबस्त कर दिया जाता है दिमाग में, जो बहुत सारे बायसेस क्रिएट करता है. इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कम्युनिकेशन, ADR जो काम कर रहा है, अभी यहाँ पर देशपांडे साहब थे, टेक्नोलॉजी के लेवल पे जो काम हो रहा है, यदि हम उसको सरल और सरस ढंग से लोगों को बता सकें. आप फर्ज करिए
कि आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंटरव्यू देख रहे हैं, मतलब वो सवालों का जवाब दे रहे हैं, ये एक हाइपोथेसिस है। साइंस इसकी मनाही नहीं करता है, साइंस हाइपोथेसिस से शुरू होता है। वो 3 इडियट्स में बहुत अच्छा डायलॉग है, प्रोफेसर सहस्रबुद्धे की बेटी की शादी है, उसमें आमिर और उनके दोनों दोस्त हैं, उन्होंने कहा आप किसकी तरफ से आए? बोले सर हम साइंस की तरफ से आए। साइंस कहता है कि हाइपोथेसिस से बात शुरू होगी, फिर फैक्ट जुटाए जाएंगे जो कि फैक्चुअली करेक्ट होंगे, जिसकी चिंता हमारे बूम और फैक्टली के दोस्त करते हैं, और भी बहुत सारे फैक्ट चेकर करते हैं, कि वो सवालों के जवाब दे रहे हैं या किसी और नेशनल पार्टी के अध्यक्ष रहे व्यक्ति जवाब दे रहे हैं, मसलन राहुल गांधी, या वो भी इंटरव्यू दे रही हैं जो अब इंटरव्यू भी नहीं देती, मसलन मायावती, और उनके बीच में कोई मशहूर यूट्यूबर आता है, सिंगर आता है, स्टैंड अप कॉमेडियन आता है, 10 सेकंड का इश्तिहार लेके कि यार आपको पता है आपके नेता पे मुकदमे कितने हैं, बस इतना पूछ के चला जाता है। छोटा सा सवाल है, क्योंकि ज़रूरत सही मौसम में बीज को घाप देने की है ज़मीन के भीतर, वो धरती की छाती चीर के निकल आएगा। इस तरह के बहुत सारे सवाल हैं जो हमें अपने वोटर्स के दिमाग में पेश करने हैं, क्योंकि दे आर कॉन्स्टेंटली बीइंग बॉम्बार्डेड विथ क्यूरेटेड कंटेंट। अभी ये क्यूरेटेड कंटेंट बड़ी कमाल की चीज़ है, ये उतनी ही अद्भुत चीज़ है जितना ईमेल में सीसी किए गए लोग हैं। क्यों क्यूरेटेड कंटेंट क्या होता है कि साहब फलाने साहब को इंटरव्यू दें या ढिकाने साहब को इंटरव्यू दें, इनकी पॉलिटिक्स क्या है, ये नरम सवाल पूछेंगे या सख्त सवाल पूछेंगे। ठीक है, सख्त सवाल पूछ भी लेंगे और उस पर हम कोई जवाब देंगे, तो क्या ये काउंटर तो पेश नहीं करेंगे किसी डेटा के ज़रिए कि अभी जो आप यहाँ पे बहुत ही शास्त्रीयता में निबद्ध या फिर वीर रस में पगी हुई बातें कर रहे हैं, लेकिन असल में तो सरकार का आंकड़ा ये कहता है। उसके बाद आपने इंटरव्यू कर भी लिया, तो आप जिन प्लेटफॉर्म्स पर निर्भर हैं उस इंटरव्यू की रीच के लिए, उसकी एल्गोरिदम क्या है, क्योंकि दे हैव द फाइनल से, दे डू नॉट हैव ट्रांसपेरेंसी। फेसबुक आपको कभी नहीं बताता है कि किस वीडियो को ज़्यादा पुश मिल रहा है, किसको कम। ट्विटर की बात नहीं करूंगा क्योंकि एलन मस्क को खुद अभी पता नहीं है, वो फिगर आउट कर रहे हैं। ही इज़ अ फनी गाय एंड ही हैज़ लॉट्स ऑफ मनी एंड दैट्स अ वेरी डेडली कॉम्बिनेशन, एंड इफ दैट इज नॉट इनफ ही सपोर्ट्स ट्रम्प। सो तो आपको प्लेटफॉर्म की एल्गो नहीं पता है, उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है। तीसरी चीज़ उसके बाद मनरेगा है। एक मनरेगा है जो भारत सरकार चलाती है, यूपीए ने शुरू किया, एनडीए ने पहले कोसा फिर कंटिन्यू किया, हालांकि उसको लेके इल्ज़ाम भी चलते रहते हैं, बजट कितना, बजट इतना। प्रधानों को बहुत लाभ हुआ है उससे, मजदूरों को भी हुआ, रूरल इकॉनमी को भी हुआ। प्रधान पहले बाइक खरीदते थे, अब बुलेरो खरीदते हैं, पर एम उनका स्कॉर्पियो का है। पर एक मनरेगा चलती है इंटरनेट की दुनिया में जिसको कहते हैं आईटी सेल। दिहाड़ी मजदूरी होती है, 50 वीडियो पे जाके कमेंट करो, गाली दो या तारीफों के पुल बांधो और अपना कलेक्शन ले जाओ। बहुत ही ट्रांसपेरेंट रोजगार परक ये योजना है, सारी पॉलिटिकल पार्टीज चलाती हैं। ये मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ यहाँ पे। वो चाहें तो मानहानि का मुकदमा कर सकती हैं, पर फिर उनको बताना पड़ेगा कि वो नहीं चलाती हैं, बशर्ते तारीख लगे कोर्ट में। तो वो फिर जनमत को अपनी तरफ से बदलने की कोशिश करते हैं। इसके कुछ पॉजिटिव पहलू भी हैं। इलेक्शन के दौर में भी फ़र्ज़ करिए कि आपने एक भर्ती निकाली, आप उसका नतीजा नहीं निकाल रहे हो, क्योंकि भर्ती निकालने का ऐलान आपने मंच पे किया था, आप बाई इलेक्शन हारे तो आपके ऊपर प्रेशर बढ़ा कि आप उसके एग्ज़ाम करवा दो, लेकिन आपके वित्त सचिव लगातार आपको आके बता रहे हैं कि खलीते में पैसा नहीं है, जितना बड़ा डब्बा खोल के आपने ऐलान कर दिया है वो नहीं है, सेहत खराब हो जाएगी, तो ऋणम कृत्वा घृतम प्रीवेत नहीं चलेगा। तो आप रिजल्ट डिले कर रहे हो, ज्वाइनिंग डिले कर रहे हो, ये राज्य दर राज्य हो रहा है। मैं आपको दर्जनों उदाहरण दे सकता हूँ। फिर चुनाव आ गए, तो चुनाव के पहले घी का पीपा नए सिरे से खुलता है, सबके घरों में कामधेनु आ जाती हैं, खासतौर पर जो सत्ता में हैं। तब रिजल्ट निकाल दिया गया और पता चला कि साहब रिजल्ट गड़बड़ आया है, या तो उसमें आरक्षण के नियमों का पालन नहीं किया गया है, या आंसर शीट दुरुस्त नहीं है, या जो भी और अलग अलग क्राइटेरिया होते हैं। उसके बाद विद्यार्थी करते हैं प्रदर्शन करते हैं, तो उनको पता चलता है कि उनकी मांसपेशियां कितनी मजबूत हैं, क्योंकि उनको मारी जाती है लाठी,
जैसे अभी बिहार में मारी गई, कभी मध्य प्रदेश, कभी राजस्थान। राज्य बदल दीजिए, सरकार बदल दीजिए, लाठी कॉमन है शासन सत्ता की, पीठ भी कॉमन है विद्यार्थियों की। फिर वो गिने चुने तर्क आते हैं कि साहब एजुकेशन माफिया है, ये वो है। फिर विद्यार्थियों के पास एक बड़ा डिजिटल टूल आता है जिससे पॉलिटिकल पार्टीज बहुत डरती हैं, वो हैशटैग चलाते हैं। बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेजेस भेजे जाते हैं, अमुक तारीख को इतने बजे से हमारा अभियान शुरू होगा, सब लोग मैसेजेस करेंगे। ट्विटर पर ट्रेंड बिल्ड होता है, सारे जर्नलिस्ट को, जितने भी बचे हैं, सेव टाइगर, सेव जर्नलिस्ट, नो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू सेव टाइगर्स, उनको टैग किया जाता है और उनमें से जिनको ये जवाबदेही लगती है कि कभी किसी खुले मंच में उनसे सवाल पूछा जा सकता है, देन दे एक्ट ऑन इट। सो देयर आर फ्यू गुड यूजेस ऑफ डिजिटल इंटरवेंशन, पर लार्जली वो बहुत ही गलत किस्म का बायस या प्रोपेगेंडा बिल्ड करने के लिए इस्तेमाल होता है, इलेक्शन के नैरेटिव को फिक्स करने के लिए इस्तेमाल होता है, डर पैदा किया जाता है। और ये बड़ी असल चीज़ है, सब तरफ से ये प्रेशर बिल्ड होता है। यहाँ सामने नेताजी बैठे हैं, संजय पासवान जी विधान परिषद के सदस्य हैं, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं। संजय जी बहुत सी ऐसी बातें, इनका जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि संजय जी बहुत सी ऐसी बातें करते हैं जो उनकी पार्टी की ऑफिशियल लाइन को सूट नहीं करती हैं। जब संजय जी भारतीय जनता पार्टी की अनुसूचित जाति के मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे तो इनके कमरे में काशी राम जी की फोटो लगी हुई थी। नाउ कैन यू इमेजिन, बीजेपी का ऑफिस बेरर है, बीएसपी के फाउंडर की फोटो लगाए है, एंड देन ही हैज हिज ओन सेट ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। संजय जी से मान लीजिए मैं एक सवाल पूछता हूँ, दो पूछता हूँ, काउंटर क्वेश्चन पूछता हूँ, तो मैं आश्वस्त हूँ कि ये पलट के मुझसे कुछ नहीं करेंगे, इनके समर्थक भी नहीं करेंगे, इसकी मैं उम्मीद कर सकता हूँ। पर हमें सिखाया गया है कक्षाओं में, एक्सेप्शंस ओनली कंफर्म द रूल। संजय जी अपवाद है, अपनी पार्टी में भी और पॉलिटिक्स में भी। दूसरी चीज़, चूंकि ये प्रोफेसर हैं तो इनको वो एक मॉरल प्रेशर भी रहता होगा कि आर्ग्यूमेंट को आर्ग्यूमेंट से काउंटर करना है, आर्ग्यूमेंट को लठ या मुकदमे से काउंटर नहीं करना है, पर ऐसा होता नहीं है। तो जिस डिजिटल इंटरवेंशन की हम बात कर रहे हैं उसमें पीआर एजेंसीज अप्रोच करेंगी जर्नलिस्ट को कि हम फलाने का इंटरव्यू करवा देंगे। ठीक है, बिल्कुल करवाइए साहब, हमें तो इंटरव्यू करना है, हमें एक्सेस मिल नहीं रही है ओएसडीओ की फौज के बीच, आप करवा दीजिए, बड़ी महान मेहरबानी। क्या पूछेंगे आप? मैंने कहा साहब ये ढाबे का मेन्यू तो है नहीं जो आपको बता दिया जाए कि पीली दाल होगी या माँ की दाल होगी, है? तो नहीं, थोड़ा आइडिया रहता। मैंने कहा उनका सार्वजनिक जीवन, उस जीवन में लिए गए सारे फैसले और बयान, उन पर बात होगी, कुछ भी सिलेबस के बाहर नहीं है। मैं उनसे बिल्कुल नहीं पूछूंगा कि घाना में पिछले वर्ष हेल्थ पे जो एक्सपेंडिचर हुआ वो आपके राज्य के एक्सपेंडिचर के मुकाबले ज़्यादा क्यों था, वो आउट ऑफ सिलेबस हो जाएगा। बहुत ज़्यादा डेटा पे नहीं पूछूंगा, विचार पे ज़्यादा पूछूंगा, पॉलिसी पे। तो फिर इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू होता है तो फिर फ़ोन आते हैं कि साहब बाकी सब तो ठीक है, बढ़िया रहा, फलाना सवाल हटा दीजिए, वो थोड़ा सा दाएं बाएं हो गया था। तो उनको बताया जाता है कि फलाना सवाल हटा देंगे तो फिर इंटरव्यू की आत्मा निकल जाएगी, गीता का ज्ञान बेकार हो जाएगा। तो कहते हैं अच्छा ठीक है। तो इंटरव्यू अपलोड होता है, फिर मनरेगा मजदूर जो आईटी सेल के हैं वो काम करते हैं। उसके बाद भी जब बात नहीं बनती है तो फिर आपके किसी और काम पे आपको तमगे दिए जाते हैं। सो ये एक तरीका है काम करने का। व्हाट्सएप पे हमें कभी नहीं पता होता है कि मैसेज कहाँ से शुरू हुआ, शायद होम मिनिस्ट्री को पता होता हो, हालांकि पेगासस को लेके अभी भी पूरी हाँ नहीं कही गई है, तो उनको पता रहता होगा, पर उनको वैसे ही सब कुछ पता होता है। सरकारों को सब पता होता है, दे हियर एवरीथिंग, दे नो एवरीथिंग बिकॉज दे आर गवर्नमेंट। अकाउंटेबिलिटी शब्द बस नहीं सुनाई देता उन्हें। एडीआर वो काम कर रहा है, आप या आपके जैसे जो भी प्रेशर ग्रुप हैं, एडवोकेसी ग्रुप हैं, इस काम में लल्लनटॉप या लल्लनटॉप जैसे जितने भी प्लेटफॉर्म खर्च हो जाएं, वॉट एवर हेल्प वी कैन डू, आप इस मीडियम का जैसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं वोटर लिटरेसी के लिए, पॉलिटिशियन से सवाल पूछने के लिए। अभी नीचे एक बड़ा अच्छा प्रस्ताव आया, फ़र्ज़ करिए आप वोट डालने जाएं, बूथ के बाहर फ्लैक्स पे एक बड़ा सा इश्तिहार लगा हो जिस पे सारे संभावित दावेदारी कर रहे जननायकों की तस्वीर, उनके ऊपर लगे मुकदमों की संख्या, और हम में से सबको आईपीसी तो पता नहीं है कि 377 क्या है और 378 क्या है, तो उनके ब्यौरे आसान और स्थानीय भाषा में, यहाँ स्थानीय पर अतिरिक्त जोर है, और फिर शायद आपकी आत्मा ठिठक जाए वोट डालने के पहले। सो लॉट्स ऑफ डिजिटल कैंपेन्स,
लॉट्स ऑफ ऑन ग्राउंड कैंपेन्स, कि आप कोई इंटरव्यू देख रहे हैं, कुछ देख रहे हैं और अचानक बीच में कोई सवाल पूछ रहा है। और आखिरी चीज़, टेक्नोलॉजी का हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कपल ऑफ वीक्स मंथ्स बैक आई वाज इन यूएस, यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन में भी इस तरह का एक प्रोजेक्ट चल रहा है पॉलिटिकल डेटा के कलेक्शन को लेके। तो वहाँ पे एडवोकेसी ग्रुप्स की ये बड़ी चिंता है कि क्या एक ऐसी एल्गो बिल्ड हो सकती है, या इन सारे प्लेटफॉर्म्स को ये कहा जा सकता है कि अगर कोई रिपीटेड ऑफेंडर है, हाउ विल यू कर्व द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर मैसेज, बिकॉज हाउ डू दे ऑपरेट। उन्होंने गालियों के ऐसे संस्करण तैयार कर लिए हैं जिसमें एक अक्षर वो इधर का उधर कर देंगे और वो गालियाँ चलती रहेंगी, कमेंट बॉक्स चलता रहेगा। क्योंकि उनको लगता है कि अगर उन्होंने एक बार जर्नलिस्ट या कम्युनिकेटर के साइकोलॉजी पे, उसके कॉन्फिडेंस पे हिट मार दिया, तो फिर बड़ा बदलाव आएगा। नेक्स्ट टाइम ही विल नॉट बी लाउड इनफ, वोकल इनफ और फैक्चुअल इनफ और करेंस बिटवीन ऑल द पॉलिटिकल इंटरव्यूज एंड ऑल द पॉलिटिकल कवरेज। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ जी। Our next speaker is Miss Karen Rebelo, editor of Boom Live. ये एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर हैं और एक फैक्ट चेकर हैं, जिसकी बात पहले हम कर चुके हैं कि फैक्ट चेकिंग आजकल बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड कॉपी एडिटर हैं एट बूम। हर स्पेशलाइजेशन इंक्लूड स्पॉटिंग एंड डिबंकिंग फेक इमेजेस एंड वायरल फेक वीडियोज। Karen is a former Reuters Wires journalist and has covered the resources sector in the UK and the Indian stock market and private equity sector. She cut her teeth as prime-time television producer doing business news shows. Thank you very much for that introduction. I'm going to speak in English, unlike Saurabh. It's always a difficult act to follow somebody who's so eloquent. But I think this topic is so interesting, and you know, the fact that this auditorium is almost full, it's encouraging for me. So thank you, ADR, for inviting me. I've been a big fan of the work that they do for a long time. I'm just going to ask, you know, I don't have any slides to present, but we're going to keep it informal, and I think that's the way these discussions work better. So all the young people in the audience, I just want to know by a quick show of hands, how many of you have come across a fake message or an image or know a family member? Okay, that's quite a lot. Even the oldies are putting up their hands, though I didn't ask them. Sorry, yeah. Okay, thank you for that correction. The young at heart. So the young at heart are the ones responsible for sharing these messages, by the way. Anyways. All right. Since there are a bit of technologists in the audience, and you know, one of the speakers spoke about Web 1 and Web 2, I'm going to use an analogy from the technology sector and talk about fake news or misinformation and disinformation, as we like to call it. It's a feature, not a bug. So what I mean is, it's people like to think that misinformation is a fallout of what is happening and where we are as a society. But I'm here to tell you as a fact checker that it's very much deliberate. Political parties use it because they've tasted blood, and it works really well for them. So if you ever, you know, want to investigate or think about this question as to why is there so much misinformation, because one very simple answer is because it's very effective. It works very well. The other thing I wanted to talk about was, since the topic of this panel is about political campaigns, everything is fair in love, war, and politics, okay? So political parties treat elections like war, and they start almost a year in advance. So they have their campaigns mapped out, and their strategists are probably hiring 6 to 8 months in advance. So if you're a researcher or a journalist, you need to start well in advance. The other thing, rather than bore the audience with what I think about the problems in this area, I'm going to give you
an example. Maybe you've heard about it, maybe you haven't heard about it. So since we spoke about the misuse of technology in campaigns, I just did a search. I looked at Facebook's ad library last night. And Facebook has this ad library which anyone can view, anyone can access. If you have the internet, you can go online, Google Meta ad library or Facebook ad library, you will find it. And I did a search, and I went to their ad report for the last 30 days. It has, organizations and individuals spending money to promote ads on Facebook. In the last 30 days, there's a page called Corruption Nath, like Kamal Nath. Corruption Nath, it's a smear campaign page on Facebook. It spent about 23 lakhs in 1 month. If you go to the advertiser details and click on who is behind this page, you will not find anything useful. So it says there's a website called corruptionnath.com, and then there's a phone number, and the address is Bhopal, Madhya Pradesh. Like where in Bhopal, which office, nothing. And I'm here to tell you that there are almost about 50 such pages for various elections in various states targeting opposition leaders or opposition parties. It's just a smear campaign page. There's also another page called Paltu Express. Paltu Express is a reference to Arvind Kejriwal because the attack against him is that he always goes back on his word. So there's a page called Paltu Express which has now changed its name. It was created just before the Gujarat elections. It was created in 2022 July. When I checked last night, it had spent more than 3 crores in Facebook ads in the past 1 year. Has anyone even heard about these pages? Have you even come across? And the reason we don't hear about it is because as journalists, there are very few people tracking this space. If you want to track politicians and know what they're up to, you need to follow the money. You need to investigate this stuff. And don't take my word for it. Don't take Boom Live's word for it, the organization, the fact-checking organization which I work for. But you can do this yourself. So the ad library is public. Anybody can go and look up as to what these parties are spending. And you need to have an idea, because this battle is a battle for India's mind and soul. And right now we are losing this battle. So that is one example I want to talk about. The other was a story done by the News Minute. In April this year, they spoke about how a private company in Bangalore is selling voter data to politicians. So about the data of about 6 lakh voters was up for sale on their website. This company had created a website which had details, the names and numbers of voters in Bangalore. And it had reached out to an independent candidate. Maybe that's a sign that I'm like droning on and this is getting boring. So, all right. So I was just talking about voter data theft, and the News Minute, a fantastic news website which covers South India very well. They did a story, an exclusive story in April where this firm, which we don't know who is behind it, but they were selling data of over 6 lakh voters in Bangalore. And I think at that point of time, the EC said they are investigating whether these voters could have been bribed via UPI. Now, this is something I wouldn't even have thought about a few years ago. You know, usually during elections, political parties distribute 500 rupees or
they put it in mithai dabbas or have some creative way of bribing voters. But UPI, think about it. So politicians are always ahead of everyone, even fact checkers, when it comes to like, all right, I'm going to keep it really short. The last thing I wanted to talk about, and I think the reason why I was invited on this panel, is about AI and artificial intelligence. Now, AI is very broad, but when we talk about, specifically when we talk about the fact-checking context, we're talking about deep fakes. So, you know, you could have a deep fake image or video, and now you can even create a fake audio as well, which from a fact checker's perspective, that's very scary. But what I want to say is that, you know, this is not an English speaking problem. Like, this is not a problem that is only going to affect my world. And I'll give you an example. In May this year, there was a photo of wrestlers, the female wrestlers who are protesting against Brijbhushan Singh. They were out in Delhi on the streets protesting. They were dragged away by the police, and they were detained in the police van. Within a couple of hours on Twitter, there was a photo of them inside that police van smiling. And as usual, people who are against this protest and who think, you know, this is just a hit job against the BJP, they said, oh, look, these female wrestlers, they look like they're having a picnic. And, you know, does this look like some protest against sexual harassment? And later on, it was found out that that picture where all of them are smiling was manipulated on a AI app called Face app, where if you have a photo of someone, you can do this sort of manipulation by just selecting an option. Like, if it's in this case, they were looking pretty somber and at the camera. They were not smiling at all. But this app immediately put a smile on their faces. And it was done so seamlessly. Like, if I asked you to look at that picture and tell me, you would have never guessed it was edited. So what I'm trying to say is that we don't have an idea of the kind of trouble that we're headed for. This is not a problem or for only, you know, people living in the cities or something. This is going to affect everyone over here. And I think with that, I'll conclude. Thank you very much. That was insightful. एक छोटी सी बात मैं यहाँ ऐड कर दूँ, बिल्कुल कॉन्टेक्स्ट में फिट होती है, बिल्कुल क्विकली, कि पीछे एक डीप फेक्स की बात हुई, तो ये टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस्ड हो गई है कि आपकी वॉइस का 3 सेकंड का सैंपल लेके किसी भी स्क्रिप्ट के ऊपर चला के आपका वीडियो, ऑडियो, एक फोटो और एक 3 सेकंड की वॉइस का सैंपल, एक स्क्रिप्ट कैन बी यूज जस्ट टू क्रिएट अ वीडियो. और वो वीडियो को कितने लोग बिलीव करेंगे, ये मतलब, और पॉलिटिक्स में कैसे यूज होगा, ये सब देखना पड़ेगा आगे. सो नेक्स्ट स्पीकर इज मिस्टर राकेश रेड्डी Dubbudu. He is founder of factly.in and ADR state coordinator for Andhra Pradesh. And Rakesh is in the editorial lead and idea machine at Factly. So we look forward to hearing you, Rakesh. Yeah, thanks, Jaskirat. Since Karen has focused on, I'll not touch the fake news part, just in passing. We all know that the current system or the current framework to trace digital expenditure is inadequate. But I'll try and lay out in the first few minutes how inadequate it is. So like Karen was saying, I'll take an example and then go to. So I come from Hyderabad. So there is a YouTuber in that language, in Telugu, who in his former avatar was a journalist. No offense meant. So what he does these days, he runs a YouTube channel. He has, I think, a couple of channels, 1.0, 2.0. He has, I think, over 500,000 subscribers. So he puts out 60 videos every day, which, I mean, looks impossible. All of them average of 3 minutes. Now, what are these videos? He gives an introduction, opens his phone, looks at his WhatsApp groups, reads out the message. Of course, that is suiting his political ideology.
and then puts out a video. So it's not news. So he keeps reading out, and then he gives his views. Now, about 50-60% of what he reads out is obviously misinformation and fake news. Now, will he be categorized by the Election Commission rules, by the extent rules? Will he be categorized as somebody who is, who is speaking in favor, or, should his ad expenditure be counted in the candidate or party? Obviously, no. So the current structure has a lot of problems because we don't know the 4 Ws and H. So who, we haven't defined. Where, because digital doesn't have geography, we haven't defined. What, so what should be counted as expenditure, we haven't defined. Who, when, is it 2 weeks before the election, 6 months before the election, and how? So it is so inadequate. So since Karen was talking about ad library, I also went through some data. So in the last 7 days on Facebook in India, so Facebook has this separate category called political ads, political and social ads. So about 3,300 advertisers in the last 7 days spent about 90 lakh rupees, which is not much by the standards of Indian election expenditure. There are about 14,000 ads. Now, this is relatively a silence period, right? We don't have elections. So imagine when we get to the end of this year when 5 states will go for elections, and 2024 when the Lok Sabha will go for elections. Same on, I think Google was around 400 ads, about 25 lakh rupees. Now, 40% of this expenditure was spent in, I think, Madhya Pradesh, Rajasthan. Understandable, they'll go for elections. And the third state was Maharashtra. Now, if in a relatively silence period, we have more than 3,000 advertisers making 14,000 ads, who is certifying them? And who is counting them? Who is tracking them? So we have this during elections, the ECI sets up MCMCs, at the district and the state level, media certification and monitoring committees, which have, I think, 4 to 6 people in each committee. Now, how on earth are they supposed to certify these ads? And that's a committee set up only during elections, those 14 days. So there's a large problem today. It is very, very inadequate, the current structure. So we won't be able to fight this menace of tracking the money, etc., with the current infrastructure. I'll also give you what ECI considers. So ECI took up this, there was a voluntary code of ethics during the 2019 Lok Sabha elections that a lot of social media and tech companies said we will comply with. This is a voluntary. So after the election, when the ECI was, I think this data was put out in the Lok Sabha, they said there were 154 instances of misinformation, quote unquote, fake news that the ECI reported to social media platforms for the 2019 Lok Sabha elections, including the assembly elections that took place during the same period. So 154 across the country, and I'm sure none of us would believe that 154 is the actual number of the pieces of misinformation that went viral. Then in another press conference also, they said around 900 pieces of content was asked to be removed. Most of them related to, I think, it was about 600 plus was related to campaign during the silence period. So it is a technical error. So now that we've laid out, it is very, very inadequate. What can be done? Coupled with this impact of fake news that Karen was talking about, I'll give you an example. Nothing to do with politics or party, but to do with how the election process itself. So every election there is this viral post that goes viral saying there's a tender vote, there's a challenge vote, and you can utilize. It's an extension of 49O. So it went to such a idiotic extent that one of the board members of Apollo Hospitals in Hyderabad, which is I think close to $1 billion company, she went to the polling booth. Her name was not there. This was during the 2019 elections. She went to the polling booth in Hyderabad. Her name was not there. There was media, and she started arguing. And she finally started reading out that WhatsApp message. And she's somebody who's a board member of $1 billion company, and she started arguing with the polling staff that I have this tender vote, challenge vote. You have to allow me to vote. So misinformation, fake news does not differentiate class, money, anything. All of us in this room are victims. So, right. Now that we've laid out everything is inadequate, what are the solutions? I don't think there is a solution to all the problems that we're talking about. We obviously, even in the session that you see, there are so many issues. Tackling them is obviously not the right one. At least on the expenditure front, I believe
So whatever the election commission sets as candidate and party expenditure, of course, we don't have limits, are all illogical. We all know that. But at least to track who is spending what, I think there needs to be very clear guidelines. And what do these guidelines? So for instance, I think like Karen was rightly saying, the preparation start 12 months, 6 months in advance. So we need to have some way of tracking this money, at least on the digital space. Now, how can we do this? One is, since anyway the technology companies have said in India, I think multiple times, that even during the US elections, that the amount of money they get from political ads is a pittance. That, you know, it doesn't, it is not a significant share in their overall revenue. I think one way of doing this could be mandatory registration of any individual or any entity or organization that wants to run political ads. And this registration should not be with the tech companies. Rather, it should be with the ECI, which I think 6 months in advance of any election. And they have to declare their allegiance, in the sense who they wish to run the ads for. Is it for a specific candidate or a party or what? And booked in the relevant expenditure. And obviously, you know, over a time, since the ad libraries are all transparent, anybody can go and check them. So these should enable tracking of expenditure. Unless we have, you know, something that starts from the ECI, and then we have transparency at the platform level where you're able to track, it is not easy for us to, you know, because like Karen was saying, who knows who are running those pages. So like I said, there were more than 3,000 people who were running ads on these platforms in a relatively silent period. Imagine if it becomes 10 times, 20 times during elections. We're talking about 30,000, 40,000, or maybe 1 lakh advertisers on social media platforms. Does the ECA have the wherewithal to, you know, track, go, certify? I don't think so. And we're just trying to create structures which we can't, you know, monitor. So the way to go about this is say that digital political ads, especially political ads, which promote a particular party, you can support, you're free to support. I think they should mandatorily go through the ECI, and this whole process should start 6 months in advance. It can't just happen on the eve of elections, those 14 days. We all know, you know, I mean, of course, a lot of money gets spent in those 14 days, but that's not when a lot of decisions get made. So, large problem, if we are willing to look through, there are solutions, but we have to take one by one. I think digital spending could be the starting point, where even at the cost of crippling some kind of, I know, you know, these stringent measures might, you know, might be a handicap for a certain individuals who want to contest independently. I know that, but, you know, to address the larger menace, I think this is the only way to go. Thank you. Thank you, Rakesh. So far, I think we are on time, and thanks to all the panelists for sticking to time limits. And finally, we have Pulkit. All right. So, and yeah, thank you. So Pulkit Sharma is a political communication specialist, and you have worked in Punjab also. Oh, very good. So, आपसे आगे भी बात करेंगे. It will be a good learning experience. And so his most notable contribution has been in Delhi Assembly elections 2015 and 2020 as social media strategist, and to the Punjab Assembly elections in 2017 and 2022 as a communications lead. So that is very interesting. And currently he works with Civic Studios. Okay, and it's a Mumbai-based production house working to bring social impact through medium of entertainment. So that is very nice to know, sir. And please, all yours. And you too have 10 minutes, sir. Thank you. First of all, good afternoon, everyone, and I would like to thank ADR for providing this platform where all of us from different aspects have come together to share our ideas, and I have learned so much listening to my fellow panelists. And I would like to start with what Jaskirat sir said, that चोर कई कदम आगे होता है और पुलिस बहुत पीछे होती है. And as someone who has been part of this political campaigning space, I would like to just share it with some instances, some examples of how कि चोर कितना आगे है. So basically,
आज की डेट में इलेक्शन even during elections to run an on a digital campaign, digital ad, it has become so simplified that I can run it from my phone by just using my Paytm account. You can connect your Paytm account to your social media account, and you don't need to share all your details as Karen shared, that you can just write, I'm from this state, this city, and you can just start running those ads, and you can run new ads every minute. You can run 100 ads within a day, and the mechanism to deal with those, the mechanism to track all those ads and the expenditures of all those ads, and if those ads are even appropriate to be shared with the to be shared online or to be approved, the mechanism is so primitive in this rapidly changing game of social media. We see the new features, new platforms, and new ways to target audiences. That all these ways are evolving every month. Every month there are new features, new platforms, and new ways of targeting the audiences. But the ways to keep a track on all of these, the ways to keep a check on all of on how all of this is being done, that is not evolving as it should be doing. For example, when during election campaigns, during the model code of conduct, election commission has this mechanism of giving permissions for every ad that a political party wants to run. Now, to get approval for running such an ad for a political party is a very rigorous process. They have to go to election commission's office. They have to submit physical pen drives containing the specific pieces of content that they want to run the ads on. They have to also provide printouts of transcripts of all the content pieces that they are going to run ads on. Then election commission sits on that thing for at least a week. That's when they give approval, and obviously all of us know political parties are not going to wait for that long. Political parties, the things that they send to election commission for approval, that is not even 5% of the content pieces they run their ads on, because if the 95% of ads which are run by political parties are not through their official pages. They are not through their leaders pages. They are through these propaganda pages, like Karen shared these propaganda pages against their opponents, some hero worship pages glorifying their own leaders. And these kinds of pages are completely untraceable, at least for the election commission. And the amount of misinformation, the potential misinformation, and the potential it has to disrupt the social harmony, especially during during elections, can be very lethal for social harmony. And there is, I think, right now no way for at least our government institutions to keep a track on all of these. And now coming to how ahead all of these technologies are going, and how we need to update ourselves. I'll just share some more instances to create this to show you how there is this sense of urgency that all of us need to work on. Now, for example, Karen just shared that example of deep fakes used to create those pictures of wrestlers smiling. During Delhi elections 2020, there was this a video of Manoj Tiwari where he was appealing to voters in 6 different languages. In all those 6 languages which he doesn't even know. But when you look at that video, you can see Manoj Tiwari is talking in all of those languages. And then there was also this campaign in which BJP leaders were sending these tailor-made videos to a huge database of voters, in which those leaders were taking those specific names of voters. Those leaders were not taking those names. Manoj Tiwari was not
speaking all those languages which he doesn't even know. It was all deep fake. Now imagine the potential of these technologies. Like, you can create videos of your opponents doing anything or saying any offensive thing that you might want them to do. Like, there are tools already available, the AI tools which you can use to clone the voices of your opponents or credible journalists. For example, imagine AI software which clones the voice of a very credible journalist and uses that voice to create a voice over video which in look and feel looks like it is from that specific channel, and it is the voice of that specific journalist who is very credible. And then using that voice and that template, you can create any piece of content suiting your own narrative. So these are the kind of challenges we are faced with today. And I don't have exact solutions to all of these. Some of the suggestions my fellow panelists have given are worth considering, but lot more needs to be thought about, lot more needs to be discussed, and we need to but we can't slow down right now, because the way things are changing, the way things are evolving these days, our institutions need to keep up with it. Our organizations like ADR, the organizations like Boom, organizations like FECLI, all these organizations working to preserve this, the fabric of democracy in our country. I think all of us need to work together and try to keep up with the pace with which this technology is evolving, and as these challenges keep becoming bigger and bigger. Other than this, I would like to stress on the issue of the political consultancy business, which is, I think, one of the biggest booming businesses in the political space these days. As Mr. Rakesh Reddy also provided a solution that we need to start 1 year in advance to be able to track all of these activities and amount of money being spent on these campaigns. So the political consultation is majorly, in today's day and age, every political party has come, like no one is left behind in this digital campaigning space anymore, because every political party has enough money to hire these agencies, these political consultation services, and they are spending a lot on it. Some of the political parties are spending as much as they spend on their ground activities. And these political consultation agencies are also a way to make your activities very untraceable, because when we see all these ads being run through all these features of Facebook ad library, if you go there, if you go see all the ads that are being run by different organizations or different political parties, but you can't exactly trace who's running those ads, because they are being run through these digital consultation companies, digital consultation agencies, which are formed just few months before the election to specifically run those digital ads, those campaigns, which might be full of misinformation or can be slander campaigns against the opponents. And I think the Rakesh Reddy sir's suggestion that these things need to be registered and these things needs to be tracked much before the election cycle even begins is very important. And I think the kind of money that is being spent on political consultations and these political consultation organizations, I think all of these also need to come into this into this process that we might want to set to keep a check on how this money, where this money is coming from, how is it being spent. So I can't even think of the kind of challenges we will face while dealing with the issues of deep fakes and the AI technologies.
But I just wanted to highlight all of these things which look so grim that we need to really speed up and catch up with all these and keep up with all of these rapidly evolving technologies and platforms. And one more thing that I would like to stress on, that we really need to start working on frameworks wherein our institutions, their mechanisms to keep a check on all of these digital campaigns, digital ads, and online need to also include integration with all these platforms where these ads are being run, where all these political campaigns are being run. Because right now, if I send a transcription and a physical pen drive to Election Commission, they give me irrespective of if I get the permission from Election Commission to run that ad or not, I can still fool Facebook or Twitter or any other platform for that matter into believing that the ad I'm running is not a social one, is not a political one. It is very easy to do that. So it is very important for our institutions to work in much more integrated way with all of these platforms to keep a track on all of these. I think that is it. Most of the other things that I wanted to talk about or highlight, my fellow panelists have highlighted them in like much better ways and with amazing examples. So thank you for this platform. Thank you, everyone. Very interesting subject, and I'm sure we have a lot of questions. Please, anyone, yeah, at the back, yeah. Good morning, everyone. Good evening, everyone. Good afternoon, everyone. Sorry, please. मेरा क्वेश्चन सौरभ अपना सर नाम बताइए प्लीज। मेरा नाम सोहम पाटिल है, मैं इंजीनियरिंग लास्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ। मेरा सवाल सौरभ सर से है कि जो एग्जिट पोल कंडक्ट होते हैं इलेक्शन के पहले, वो एग्जिट पोल आजकल क्या हो रहा है कि फलाना पार्टी ले रही है, उस चैनल को खरीद ले रही है, दूसरी पार्टी दूसरे चैनल को खरीद रही है, तो इस एग्जिट पोल पे किस तरह हम विश्वास रख सकते हैं? और दूसरी बात यह है कि ये एग्जिट पोल आने वाले इलेक्शंस पे क्या इम्पैक्ट करते हैं? सोहम, सबसे पहले तो इस बात के लिए बिल्कुल परेशान मत होना कि तुमने गुड इवनिंग या गुड आफ्टरनून बोल दिया। दैट इज टोटली फाइन। नमस्कार से भी शुरुआत हो सकती है। नहीं, ये इट क्रिएट्स डीप इम्पैक्ट, कॉन्फिडेंस झकझोर देता है। पब्लिकली गलत अंग्रेजी बोलने की शर्मिंदगी बहुत बरसों तक रहती, जबकि उसकी ज़रूरत नहीं है। एग्जिट पोल इलेक्शन के पहले नहीं होते हैं, वो इलेक्शन के बाद होते हैं। दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड एग्जिट पोल। और कई वॉचडॉग्स के पिटीशन के बाद ये हुआ कि चुनाव के दौरान जो रुझान वाले पोल आते थे, जो कि चुनाव के नतीजों को प्रभावित करते थे। इनफैक्ट आप अभी भी देखिए 7-8 बजे तक पोलिंग चलती रहती, क्योंकि पोलिंग बूथ के बाहर जो लाइन है, जब तक वो वोट कास्ट नहीं करेंगे। लेकिन 5 बजे 6 बजते ही सारे टीवी चैनल आपको एग्जिट पोल दिखाने लगते हैं। मैं आज तक नहीं समझ पाया हूँ कि अभी कतार है, लेकिन इन्होंने डेटा ले भी लिया, प्रोसेस भी कर लिया, ग्राफिक्स भी बनवा लिया और रिफ्लेक्ट भी करने लगे। तो ये मैं आपको इनसाइट बता रहा हूँ ताकि आपको ये पता रहे कि आपको कितना यकीन करना है। दूसरी चीज़, जो एजेंसीज ये एग्जिट पोल करती हैं, वही एजेंसीज पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए भी काम करती हैं। दो इन द प्राइवेट कन्वर्सेशन दे हैव सेड कि नहीं, हम बहुत इसको क्लियर रखते हैं, हम यहाँ का डेटा वहाँ, वहाँ का यहाँ शेयर नहीं करते हैं, क्लाइंट की सीक्रेसी भी मेंटेन रखते हैं और डेटा की भी, वरना धंधा कैसे चलेगा। मुझे लगता है कि जो वोटर है अभी वो थोड़ा सा वोक हो गया है, स्मार्ट हो गया है। उसको पता है कि टीवी पे जो दिख रहा है वो वही है जो ताकतवर लोग दिखाना चाह रहे हैं, इसलिए वो डिजिटल पे ज़्यादा रिलाय करते हैं। इसीलिए सारे पॉलिटिकल पार्टीज अब डिजिटल को मैनिपुलेट करने पे ज़्यादा जोर दे रही हैं। जो हमारे फेलो पैनलिस्ट ने कहा कि फेसबुक पे किस तरह की शेडो एडवर्टीजमेंट हो रही है, जिसका आप लिंक नहीं खोज पाएंगे कि ये कहाँ जाता है। और इसमें होता क्या है कि अगर मुझे ये वाला पानी का बॉटल बेचना है, तो एक तरीका है कि मैं इसका प्रचार करूं, दूसरा तरीका है कि मार्केट में बाकी जितनी बॉटल है उनको मैं घटिया बता दूं। तो उस पर भी बहुत काम चलता है कि जो आपका अपोनेंट है उसकी इमेज को कैसे ऐसे की जाए। एक चीज़ जो शायद डिस्कशन से छूट गई, ट्विटर पे भी ये सुपारी जॉब बहुत चलता है। बहुत सारे इन्फ्लुएंशियल ट्विटर हैंडल्स हैं, कोई पैरोडी अकाउंट है, कोई और अकाउंट है, और दे डू द सेम थिंग। बड़े पैमाने पर ऐड लिया जाता है या बहुत ही
सिस्टमेटिक ढंग से सबोटाज किया जाता है किसी भी नैरेटिव को या इन्फ्लुएंस किया जाता है। पर जब तक इस तरह से खुल के बात होती रहेगी चीज़ें बेहतर होंगी। सो डोंट रिलाई ऑन एग्जिट पोल्स, कई बार वो गलत भी साबित होते हैं। एक छोटा सा सवाल है कैरन और राकेश से कि इलेक्शन कमीशन से हम क्या एक्सपेक्ट करते, डू वी एक्सपेक्ट फ्रॉम द इलेक्शन कमीशन एंड व्हाट डू वी एक्सपेक्ट फ्रॉम द ग्लोबल डिजिटल प्लेटफॉर्म्स? व्हाट कैन दे डू टू मेक इंडियन इलेक्शंस फ्री एंड फेयर? बोथ, you want to go first? It's a great question. From the election commission, we want them to act in the way that I don't want the election commission to do my job. They cannot do fact checking. What they can do is publicize to people that there are fact checkers, and then work with a group of fact checkers and tell people that if you see these, if you come across these messages, refer to these websites which can debunk. That is in terms of misinformation. With regards to these Facebook pages that are spending huge amounts of money, like Rakesh suggested, we need to have these people or organizations or consultancy agencies register with the EC as to who they are and come out, give complete details about who they are, and there should be an audit that this person who is saying I am so and so and not representing any party is actually that person. That is probably a way of doing it. In terms of the tech companies, Facebook, I mean, there should be pressure on Facebook to say that we will not accept this money maybe 1 month before elections, or we'll stop completely, which I think is they won't say it because it's big money. It's a business at the end of the day. But what Facebook needs to understand is, when I brought up this issue with them, because we are Facebook's third-party fact-checker, just like Factly as well, they give this excuse of privacy, but the larger interest is to protect the people of this country. It's not to protect that one person, whoever's running that page. And we know that these pages are being run by political consultancies acting on behalf of political parties. So, there should be pressure from journalists and from civil society on platforms like Facebook to say that this shadow business where you're earning in lakhs and crores cannot continue. Like I always say, sunlight is the best disinfectant. So yeah, those are my suggestions. I'll just pass it on to. I'll just add, see, the EC cannot outsource its job to the technology companies. I think at least during elections, I would say 6 months before the election, because digital has changed. You cannot go back to the silence period of 14 days, 15 days. It's not going to work. So currently, during the 2019 and I think subsequent elections, they've IMAI has come up, the industry body has come up with some voluntary code of ethics. These won't work. So the election commission has to put its foot down and say every ad that is run on these platforms, as long as political, has to go through the EC. So they have to certify who is that, not certify, but they need to know who is that page, what is their allegiance, so that this can be tracked and spent. Now how much they spend is up to them, but at least people get to know what they're spending. So currently we are neither here nor there. So the EC says, yeah, you have a voluntary code of ethics, you tell us, we'll tell you what to remove, but that is largely like we saw in the 2019 data. It is largely limited to technical issues, like you put an ad in the 48 hours, or misinformation around ballot boxes, etc. So there's a large volume of other ads, other information which the EC doesn't want to wade into. So I think the key here is EC. The EC can put its foot down and the technology companies will fall in line because elections are sacrosanct. They need to take charge. So you cannot outsource this job to companies. लोगों के हाथ में मोबाइल है अभी, तो उनके हाथ में जो इन्फॉर्मेशन आता है वो स्थानीय भाषा में आता है, जो ज़्यादातर मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन है. वेयरएज द फैक्ट चेकिंग जो वेबसाइट्स हैं, टेक्निक्स हैं, वो स्पेशलाइज्ड टेक्निक्स हैं, ज़्यादातर इंग्लिश भाषा में उनके वेबसाइट्स और उनके ऐप्स हैं. तो ये फैक्ट चेकिंग होके लोगों तक पहुंचता ही नहीं है ज़्यादातर, जितना मिस इन्फॉर्मेशन स्थानीय भाषा में उनके हाथ में मोबाइल में एवरी डे पहुंचता है. तो क्या करें इसको लेके, क्योंकि हम तो लोगों के साथ जब काम करते हैं तब लिटरली वो अल्ट न्यूज़ हो या बूम लाइव हो, वो गलत है, इसको स्थानीय भाषा में ट्रांसलेट करके बाद में लोगों को बताते हैं, तब तक वो
3-4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, पता नहीं कितने करोड़ों लोगों तक पहुंचा चुका होता है. You're absolutely right, ma'am. Most of the misinformation in this country, majority of it is in Hindi and in regional languages. And unfortunately, what has happened is English has sort of, had the first mover advantage to sort of start fact checking in English first. But the solution to this is we need more regional languages. We need fact checkers in regional languages to become as big and as famous as Alt News. Or, by the way, Alt News and Boom Live both have Hindi websites. But maybe the reach is not as great as you rightly pointed out. But the only solution is to have fact checking in native languages, which we are seeing a lot of. Over the past 3 years, I've seen a lot of fact checking in Tamil, in Kannada, and in Marathi and other Indian languages. So, hopefully we can change this trend in the next few years. इसमें एक Google is working on a platform, on a language tool, जिसमें अब वो ये ऑप्शन दे रहे हैं कि आप किसी भी भारतीय भाषा में अगर आपका कंटेंट है तो आप सबटाइटल की लैंग्वेज चूज़ कर सकते हैं. इन अ रिसेंट कॉन्फ्रेंस दे इन्फॉर्म्ड अस, बिकॉज हम लोग अभी ये कंसर्न है कि हम कितनी इंडियन लैंग्वेजेस में या दूसरी लैंग्वेजेस में अपने कंटेंट को मैग्नीफाई कर सकें. सो आई थिंक टेक्नोलॉजी विल हेल्प. इसमें मैं भी एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ, रहा नहीं जा रहा, बहुत छोटी, कि ये जंग है, इसमें सिर्फ बाकी लोग कुछ कर नहीं सकते, मतलब फैक्ट चेकर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, हम लोगों को, जनता को भी कुछ करना पड़ेगा. मतलब वी हैव टू फिगर आउट वेज ऑफ फाइटिंग मिस इन्फॉर्मेशन. बहुत बड़े लेवल पे हो रहा है और आगे और बड़े लेवल पे होने वाला है, तो हम जितनी तैयारी करेंगे उतना ही आगे से मतलब कोई और हेल्प कर सकता है हमारी. तो गहराई में जाने की ज़रूरत है, लेकिन मैं इसको कनेक्ट करना चाहता हूँ वो महाभारत का जो किस्सा है, जब अश्वत्थामा का नाम लेकर द्रोणाचार्य जी को ख़त्म किया जाता है, तो वहाँ से ये राजनीति है. प्रॉब्लम ये है कि हम एलोपैथिक मेडिसिन की जो सिस्टम है उसकी तरह मर्ज की सिस्टम को मर्ज की जो सिम्टम्स हैं उनकी दवाई ढूंढ रहे हैं, लेकिन जो उसका ओरिजिन है, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं या उनको सपोर्टर्स हैं, उनके ऊपर किसी प्रकार का पाबंदी या कोई प्रकार का कोड ऑफ कॉन्डक्ट इसको लगाने के लिए सोचने का. बिकॉज देयर इज सो मच ऑफ एनर्जी, सो मच ऑफ रिसोर्सेज, सो मच ऑफ टाइम दैट probably could have been used much more productively. He's just going into fighting all of this. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये करना नहीं है, ये ज़रूरी है भी, but this is just symptomatic treatment. Can we look at the larger issue and by default, जैसे कुछ कानूनों में, क्रिमिनल कानूनों में, the burden of proof is reversed on the accused. उनको दिखाना पड़ेगा कि मैं गुनहगार नहीं हूँ. Is there something that we can think of in the law that will make the beneficiaries of this misinformation directly responsible for this behavior? Thank you. मैं हाल में नरोत्तम मिश्रा का इंटरव्यू कर रहा था. मध्य प्रदेश के एक माननीय गृह मंत्री हैं. उनके ऊपर मुकदमा जो भी सुप्रीम कोर्ट में है और वो इसी तरह का है. उन पर इल्ज़ाम है कि पेड न्यूज़ छपी बहुत सारी. तो एक तो फेक न्यूज़ है, फिर पेड न्यूज़ भी है. तो उन्होंने कहा कि साहब हम तो पॉलिटिक्स में कोई भी छपवा दे. अब ये इतना मासूम तर्क है कि कोई भी छपवा दे एक साथ एक ही दिन ज़िले के सारे अखबारों में. तो देयर हैज़ टू बी अ मैकेनिज्म जिसमें ये अकाउंटेबिलिटी फिक्स हो. एंड आई होप एडवोकेसी ग्रुप रेज दिस इशू एंड वी ऑल विल कम टुगेदर. अश्वत्थामा हतो हता नरो व कुंजरा ना जाना. So I think lots of questions. If we continue तो बहुत दूर चले जाएंगे. So I think next session is ready. हाँ, तो ज़्यादा लेट नहीं करते हैं. सब स्पीकर्स अभी यहीं पे हैं, मतलब ओवर लंच आई थिंक मोस्ट ऑफ अस आर हियर. तो आई थिंक वी कैन टॉक. तो थैंक यू सो मच.